गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक, आज हम देखेंगे हिंड ब्रेन। जैसे फोर ब्रेन में हमने क्या देखा था, तो फोर ब्रेन हैज द थ्री पार्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। और मिड ब्रेन में क्या था, सेरेब्रल पेडंकल एंड द ऑप्टिक लोब, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, तो आज हम देखेंगे हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में क्या है, तो हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ three part. Which one? The first one is the cerebellum, the second one is the pons, and the third one is medulla oblongata. तीन पार्ट होते हैं. Now let us start with the first part, that is cerebellum. So the cerebellum is the large part of the hind brain. It is the large part of the hind brain. It is large part of hind brain. Okay, now cerebellum. So actually cerebellum is the solid part and it possesses the branching tree-like structure of the white matter known as the Arbor Vitae. It is solid part and it has the branching tree-like structure of white matter and it is known as Arbor Vitae, surrounded by the ग्रे मैटर. ओके, अगर हम ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं और सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, फॉर एन एग्जांपल तो यहाँ क्या होगा, इट पॉजेस द सेरेबेलम और सेरेबेलम के अंदर ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा. दैट ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द Arbor Vitae. It is known as the Arbor Vitae. Okay, देखो मैं आपको ये ब्रेन के मॉडल में दिखा रहा हूँ कि this part is known as the cerebellum. This portion is called the cerebellum and inside this it possesses the tree-like structure, branching structure of the white matter. It is known as the Arbor Vitae. और उसके आसपास क्या होता है, it possesses the gray matter. Okay, so यहाँ अंदर की तरफ क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा, पर बाहर जो होगा दैट इज ग्रे मैटर. क्लियर? सो cerebellum. Now the cerebellum has the two cerebellar hemisphere. There are two cerebellar hemisphere and both are joined together with the help of vermis. Okay, so both the cerebellar hemisphere, for an example यहाँ देखो कि जैसे this two are the cerebellar hemisphere, both the cerebellar hemisphere are joined together. ये दोनों एक दूसरे के साथ joint हो जाएंगे. That joining part is known as the vermis. That joining part is known as the vermis. Okay, and what are the functions of the cerebellum? So the functions of cerebellum is it is responsible for the various motor activity,
And which type of motor activity? It is help in the typing, then talking, then running, walking. This all type of activity is controlled by the cerebellum. Clear? So this is about the cerebellum. Now the next part is the pons. So the second part is pons. So pons is a small spherical part of hind brain. Pons actually कहाँ होता है? तो pons is present here. यहाँ पर pons होता है. So pons is present between this part is known as the medulla oblongata, and ऊपर तरफ क्या होता है? It has the midbrain. So pons is present between the medulla oblongata and the midbrain. So it present between medulla oblongata and the midbrain. The pons possess the two longitudinal nerve fiber. It has two. It has not two. It has one longitudinal and one transverse nerve फाइबर. उसमें दो फाइबर होंगे, एक लॉन्जिट्यूडिनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा. दैट लॉन्जिट्यूडिनल नर्व फाइबर इज लोकेटेड लाइक दिस. द लॉन्जिट्यूडिनल नर्व फाइबर इज लाइक दिस and the transverse nerve fiber is like this. Okay, so this longitudinal nerve fiber is convey the message or it transmit the impulses from pons to cerebrum. Means it transmit the impulses between the cerebrum and the medulla oblongata. So the first is longitudinal nerve fiber. This longitudinal nerve fiber is transmit the impulses between medulla oblongata and cerebrum. Medulla oblongata and the cerebrum. सो लॉन्जिट्यूडिनल जो नर्व फाइबर है वो क्या करते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में से इंपल्सिस कहाँ ले जाएंगे? सेरेब्रम में, और सेरेब्रम में से मेडुला ऑब्लोंगेटा. और जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर है, द सेकेंड पार्ट इज द ट्रांसवर्स नर्व फाइबर. द ट्रांसवर्स नर्व फाइबर इट ट्रांसमिट द इंपल्सिस to cerebellum. मीन्स वो क्या करता है? impulses को cerebellum में ले जाता है. Okay, apart from this it has one respiratory center known as pneumotaxic center. Actually the role of this pneumotaxic center is responsible for the like forced breathing. It helps in the forced breathing. So this is cerebellum, this is pons. तो pons में actually pons कहाँ होता है? तो that is between the medulla oblongata and midbrain के बीच में होता है. उसमें दो longitudinal nerve fiber होता है. एक होता है वो medulla oblongata और cerebellum के बीच में होता है और वो impulses को conduct करने में help करता है. दूसरा होता है pons और cerebellum के बीच में, और वो क्या करता है? Transmit the impulses to pons to cerebellum. Okay, now the third part is the medulla oblongata. So the next part is the medulla oblongata. The medulla oblongata is the pyramid shaped structure. It is the pyramid
shaped, and the posteriorly medulla oblongata is connected with the spinal cord. Okay, suppose ये medulla oblongata है, यहाँ से medulla oblongata होगा. So this medulla oblongata is connected with the spinal cord. This is the medulla oblongata. Here it is the cerebellum. Here it is the pons. Okay, so this medulla oblongata is posteriorly connected with spinal cord. This medulla oblongata do not possess any nervous tissue. It do not have any nervous tissue. It has the network of blood vessels known as posterior choroid plexuses. Okay, plexus लिखो तो मुझे posterior choroid plexus. Okay, जैसे हमने पढ़ा था एपिथैलेमस में एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस होता है. एपिथैलेमस में कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता, उसमें भी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है. यहाँ भी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, एंड दैट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सस, और वहाँ से ब्रेन में से ब्लड बाहर निकलता है. सो नाउ दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा इज covered the fourth ventricle. कल हमने पढ़ा था कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल होता है. ओके, आगे के वीडियो में देखागा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से 4 टाइप के वेंट्रिकल्स हैं. 2 लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड दी फोर्थ वेंट्रिकल. जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसको कौन कवर करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको कवर करता है. और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो फंक्शंस हैं, सो द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज कैटेगराइज्ड इन द 2. वन इज वाइटल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द नॉन वाइटल फंक्शन. अब ये वाइटल और नॉन वाइटल क्या है? ओके, तो दैट वाइटल एंड द नॉन वाइटल फंक्शन. तो ये वाइटल और नॉन वाइटल फंक्शन क्या है? तो इन द वाइटल फंक्शन एक्चुअली इट कंट्रोल द कार्डियक एक्टिविटी. ओके, सेकंड इट हेल्प इन peristalsis movement. Peristalsis movement means the passing of the food from from esophagus to stomach to duodenum and the small to large intestine. Then it help in the vasomotor activity, means regulate the blood pressure. Also it control the respiration. जैसे हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो रेगुलेशन होता है उसके लिए रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है. सो दिस ऑल आर दी वाइटल फंक्शन. जैसे swallowing है, ओके, देन सलाइवेशन है. दिस ऑल आर दी वाइटल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दी मेडुला ऑब्लोंगेटा. नॉन वाइटल फंक्शन इज दी स्नीजिंग है, देन कफिंग है, then yawning, vomiting. These all are the control by the medulla oblongata. One more thing, जैसे हमने पढ़ा था कि 2 cerebellum होता है, राइट साइड cerebellum एंड दी लेफ्ट साइड cerebellum. ओके, ऐसे होगा cerebellum, और यहाँ बीच में से जो निकलेगा दैट इज
मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि ऑलवेज दिस राइट साइड ब्रेन एंड द लेफ्ट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। बट आप यहाँ देखो ये पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा फ्रॉम वेयर ऑल द नर्व्स आर क्रॉसिंग ओवर। मीन्स अगर आपके राइट साइड के ब्रेन में अगर कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो आपका लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो राइट साइड पैरालिसिस हो जाएगा। बट अगर सोचो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ डिफेक्ट आया या फिर कुछ चोट लगी या इंजरी हुई, देन इट पैरालाइज द होल बॉडी। व्हाई? बिकॉज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा द नर्व्स आर क्रॉसिंग, ओके, दैट्स व्हाई। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमने क्या देखा आज? हिंड ब्रेन में सेरेबेलम देखा, पॉन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss the spinal cord. Thank you.